Hello everyone, I'm Akanksha welcoming you all to SPE Education, and in this video we are going to discuss the question answers of phrasal verbs. Previous video रे मु phrasal verb रो entire chapter को cover करथिली आज हमें यार question answers को discussion करिबा. So first activity कोन देजे हमें देखिबा. In some sentences given below, the particles can be separated from the verbs and put after the noun phrase, the object. So find out such sentences and rewrite them with the particles after the objects. Write NS. NS means not separable. Again the sentence where particles cannot be separated. Previous video रे मुझे तबे phrasal verbs समान को पढ़ेली कोन कहितली adverb particle संगरे जतबे main verb गोटे मिसिकी जो phrase टा create करे ताको हमें कहिथाउ phrasal verb. So एठी किछि तळे phrasal verb रो example दिया हिची किछि किछि phrasal verb को हमें separate करके लिखि परिबा after the object ପରେ लिखि परिबा आउ किछि phrasal verb एम्ति अछि जहा को हमें separate करि परिबा नाही. So जो गुडा को हमें separate करि परिबा ता आंसर हमें आउथरे लिखिबा आउ जो गुडा को separate करि परिबा नाही ns ता साइड रे हमें लिखिबा that means not separable. एबे देखिबा हमें फर्स्ट क्वेश्चन she is looking for a good dress. एटी अछि हमर phrasal verb look for. So look for को एटा ns लिखाइ छि that means we cannot separate the verb from its adverb particle. जदि मु लिखिबे को she is looking a good dress for sentence टी wrong हिजबो. That is why it cannot be separated. The enemy blew off the bridge. The enemy blew the bridge off. एटा separate हेइ परला. Blew off थिला हमरो ताको हमें blew आउ off मध्य रे ऑब्जेक्ट को रखि परलु. The police are looking into the matter and we cannot separate it. ns लिखा जाई छि take off your shoes before coming in. Take off your shoes. Take your shoes off before coming in. So it take off थिला आउ take हमें take off को separate करिकी मझिरे गुड ऑब्जेक्ट रखिलु take your shoes off before coming in. I called on an old friend yesterday. This cannot be separated. Call on अछि एठी मु याको एम्ति लिखि परिबिनी I called an old friend yesterday on. एटा भूल हि जिवो so this is not separable. Next होछि you should keep up your honor. Keep up अछि हमर एठी you should keep your honor up. एटा हले भूल हि जिवो so this is not separable. Can I count on your help during difficulties? Count on अछि एठी phrasal verb आउ याको मध्ये हमें सेपरेट करि परिबा नाही so एठी रेखा गला ns. The government put down the revolt firmly. एठी अछि हमर phrasal verb put down तो याको हमें सेपरेट करि परिबा the government put the revolt down firmly. The child hit on a plane to escape punishment. कोन हिजो एटा the child एठी hit on अछि बट याको हमें सेपरेट करि परिबा नाही तो लिखि देले ns. We called off the strike after an argument. आउ याको हमें सेपरेट करि परिबा नाही सो एठी लिखा हला ns. जदि तुम माने जानि परनो ए phrasal verb गुडी माने you can check the previous video जोथरे कि मु phrasal verb रे पूरा डिटेल्स से ताको डिस्कशन करछि आ phrasal verb रो माने मध्ये कहि दैछि सेही वीडियो टी को तमे जाके देखि परिबो then you can come back to this video and do the activities. एबे देखिबा activity 2 रे कोन दैछि replace the noun phrase in italics by an appropriate pronoun and use it in the right place. So noun phrase को replace करिया पई दिया हिछि जोडा कि italics रे अछि by an appropriate pronoun. Noun phrase को हम replace करिवा कहा द्वारा गोटे appropriate pronoun द्वारा replace करिवा and use it in the right place. देखिबा हम आंसर केमति काढिबा we saw our friends at the airport. So we saw our friends at the airport हम ताको replace करि परिबा we saw them off. Can you pick out the correct answers? So एठी हमें करि परिबा can you pick them out? We have pointed out many mistakes. We have pointed them out. It is time to wind up the speech. Wind up माने close करिबा. It is time to wind it up. So ए भया भाबरे हमें ताको लिखि परिबा the soldiers pulled down the fort. The soldiers pulled it down. Can you carry on this work a little longer? Can you carry on this a little longer? Stoji they threw away all the useless things. They threw them or those away. खाली एमति लिखि परिबा they threw them away or they threw those away. Things लिखिबा किछि आवश्यकता नाही. We closed down our business as it was not profitable. So we closed it down. It कहा को बुझेला से बिजनेस को बुझेला. We closed it down as it was not profitable. Profitable अर्थ होछि लाभदायक वा beneficial. You must lay by. Do let me know what is the meaning of lay by.
You must lay by a part of your income for future use. So এটা আমি লিখি পারিবা we must lay by it, that means a part of your income. ইয়াକୁ আমি replace କରିକି it ଲେଖିଲୁ for future use. Please look up the word in a dictionary. Look up from meaning होची search କରିବା. So please look it up in the dictionary. The word को replace करके हमें कौन लिखिलु it लिखिलु. Have ruled out any change in his behavior. They have ruled him out. So ये भले भावरे हमें replace कर लू. अब देखिए हमें activity 3. Complete the sentences using the phrasal verbs and the objects in the appropriate places. So एटी हमें phrasal verb को use करिबा और object को use करिबा ता appropriate स्थान रे. Put the verbs given in brackets into the correct tenses. ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ tense change କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ bracket ରେ ଦିଆ ହେଇଥିବା verb गुड़िकर correct tense form रे ଆମେ ତାକୁ use କରିବା. I will dash after lunch. I will call you back after lunch. एटी call back ଦେଇଛି you ଦେଇଛି. So କଣ ହେଇଯିବ I will call you back after lunch. It's a trick. Only a fool will dash. So এটা ଗୋଟେ trick ଅଟେ କେବଳ ଗୋଟେ ବୋକା ଲୋକ ହିଁ এই ট্রিকটি বুঝি পারিবো ନାହିଁ. So only a fool will fall for it. এটি fall for ଦେଇଥିଲା it ଦେଇଥିଲା. Dash on my way to school. এটি came across ଦେଇଛି a strange animal ଦେଇଛି. ତ এই দুইটি ফ্রেজ কু আমি ইউজ করিকি সেন্টেন্স টি বনেଇବା. I came across মানে সামনা সামনি হবা. I came across a strange animal on my way to school. Next होची it is better to dash throw away ଦେଇଛି broken chairs. So ଏଠି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବା କଥା କୁହାଯାଉଛି. It is better to throw broken chairs away. ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବା ଉଚିତ. It was a mistake. My friend dash pointed. So point out ଦେଇଛି ଆଉ it ଦେଇଛି. It was a mistake. My friend pointed it out. ତ ଦେଖି ପାରିଲ it was a mistake ଦେଇଥିଲା ମାନେ past ରେ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି point out ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ past ରେ ହିଁ କରିକି next phrase ଟି କୁ ଲେଖିବା. That is why ଏଠି ମୁଁ କଣ କଲି pointed out କଲି. point out ରୁ ହେଇଗଲା pointed out. So second line ରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା tense ର correct form ରେ ଆମେ ତାକୁ put କରିବା. ଏଇଠି ଆମେ use କଲୁ pointed out. Next, who is dash nowadays looking after or this building? माने এই বিল্ডিং র দেখাশোনা ଏବେ କିଏ କରୁଛି? Who is looking after this building nowadays? His son died. He has never dash get over his sorrows. माने निज दुखरु बाहर को बाहरिबा. His son died. He has never got over his sorrows. So to get over ହେଇଗଲା got over. तमे ता previous sentence को देखिबो because previous sentence ता past रे थिला. That is why आमे get over कलु got over. The machine is making a lot of noise. Can you dash switch it off? So a machine टा बहुत sound करूची बहुत noise create करूची. Can you switch it off ହେଇଯିବ. The machine is making a lot of noise. Can you switch it off? तुमे याको बंद करि परिबो कि? She offered to help me but I dash turned down it. कौन हबो? She offered to help me but I turned it down. Turned down no meaning होची rejected. याको सब मु phrasal verb पढिला बेले तमन को बुझीतिली turned down no meaning होची rejected. She offered to help me. से मते सहाय्य करिया पई offer कले but I turned it down. माने मु ताको reject कर देली. I met Ramesh today. He dash asking after or you. So I met Ramesh today. He was asking after you. This school is running well. He will. So पिलामाने question उठे mistake अच्छी. This school is not running well हबो. इस school टी भलो चलुनी. We will close it down. So हमें ताको बंद कर दोबा. So this school is running well. Is not running well. इस school टी भलो चलुनी. We will close it down. Close down को हमें separate कलु. और मझे हमें कौन put कलु? It को put कलु. Close it down. Your brother is in trouble. You must dash during his distress. Stand by him. तो संगरे छिड़ा हवा कथा जदि तुम भाई विपद रे अछि बा प्रॉब्लम रे अछि. Your brother is in trouble. You must stand by him during his distress. एबे देखिबा activity 4 कोन कहिछि. Dictionary use दिया हैछि. Study the diagram given below. It look देछि आउ किछि adverb particle देछि ता संगरे ताको हमें यूज करके सेंटेंस रे कन्वर्ट करिबा. So combine the verb look with the particles shown as raise and use them in the following sentences. So look अछि आउ ता साइड रे विभिन्न adverb particle गुडी को देछि.
ताकू हमें जॉइंट करके सेंटेंस रे कन्वर्ट करबा जेमति कि लुक फॉरवर्ड टू लुक इनटू लुक ऑन लुक आउट ए भलिया करके हमें लिखिबा द वर्ब एंड द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड वर्ब हैव बीन गिवन इन ईच केस सो यार मीनिंग दे देची जे को मीनिंग रे हमें लिखिबा सो एटी किछ एग्जांपल्स देची आ मु तमन को पई एटी आंसर लिखि देची सो लुक आउट माने टू बी केयरफुल देयर माइट बी अ स्नेक देयर सो सेटी उडे साप होई पारे सो बी केयरफुल grandma looked dash फकीर मोहन so grandma looked after माने to be care of जत्न नबाको कहा जाय look after a team of experts is looking into this problem look into रो माने होची investigate करिबा बा अनुसंधान करिबा so a team of experts is looking into this problem गुडे experts कर टीम एही प्रॉब्लम विषय रे अनुसंधान करूचंती तापरे अछि look up to रो माने होची to consider somebody in a particular way I look up to Rita as my sister मु रीता को मो भौणी भया भाबे माने जणको गोटे पर्टिकुलर वे रे जणको मानिबा सो एठी रीता तार एक्चुअल सिस्टर नुहे बट सेटा को भौणी भया माने प्लीज लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी लुक अप रो माने जस्ट टिके आगु मु तमन को कहि कि गली टू सर्च फॉर समथिंग इन द डिक्शनरी लुक अप माने खोजिबा डिक्शनरी रे वर्ड ता खोजिबा पई ना रिक्वेस्ट जणे करूची टू कंसीडर विथ कंटेम्प्ट नेवर लुक डाउन अपन गर्ल्स द लुक डाउन अपन माने जनको डिसरेस्पेक्ट करिबा सो डू नॉट डिसरेस्पेक्ट गर्ल्स नेवर लुक डाउन अपन गर्ल्स दे कैन वर्क वंडर्स तो सेमान तंगो लाइफ रे बहुत प्रोग्रेस करि परिबे सो डू नॉट डिसरेस्पेक्ट गर्ल्स नेक्स्ट होची लुकिंग फॉरवर्ड टू रो माने कोन टू एक्सपेक्ट समथिंग एन्जॉयबल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय बर्थडे सो मो बर्थडे पई किछि एन्जॉयबल एक्सपेक्ट करूची लुक एट रो माने होची टू थिंक अबाउट और स्टडी गोटे जिनस विषय भाबिबा बा पढिबा सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एटा बहुत समय लेखा आइते तुम एक्टिविटी गुडी करे लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस तळे देथिबा सेंटेंस गुडी को पढो टू वॉच समथिंग हैपनिंग यार अर्थ कोन लुक आउट रो माने होची टू वॉच समथिंग हैपनिंग एवरीवन लुक्ड आउट इन साइलेंस समस्ते नीरव हे कि किछि जिंस को देखिले नेक्स्ट होची लुक्ड अपन माने टू कंसीडर विथ रेस्पेक्ट जन को सम्मान दबा आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर्स ऑल द चिल्ड्रन लुक्ड अपन स्वामी नेक्स्ट होची लुक फॉर रो माने होची टू सर्च खोजिबा वेयर इज माय ग्रामर बुक आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट सिंस मॉर्निंग सो मु सकाळ पाखरु मो ग्रामर बही खोजुची ताहा कोठी अछि नेक्स्ट हम देखिबा एक्टिविटी 5 रे कोन करिया पे कहैछि सेही भलिया डिक्शनरी यूज दिया आइछि आ एथरो verb गुडिको देछि पार्टिकल केवल up देछि so combine the particle of with the verb shown as raise and use them in the following sentences putting them into correct tense form the correct tense form रे हम ताको यूज करिबा पूर्व थर कोन हेतिला पार्टिकल्स गुडिको देथिला मजे गोटे verb देथिला look but एथरो गोटे पार्टिकल देछि विभिन्न verb देछि हम ताको कंबाइन करके लिखिबा जेमति कि blow off use off turn off set off ए बळे लिखिबा आ यार माने मध्ये एटी दे दिया जायछि एटी कीप अप रो माने होछि टू रिप्लेस सम लॉस्ट थिंग वी मस्ट वर्क हार्ड टू कीप अप द लॉस्ट आवर जो समय गुडा को नष्ट हे जायछि आमे ताको काम करिकि भरपाई करबा बा ताको काम करिकि भरण करबा नेक्स्ट होछि पैक अप रो माने होछि टू स्टॉप वर्किंग इट्स गोइंग टू रेन वी शुड पैक अप एंड गो होम आमे वर्षा हो पई जाउछि आमे काम एबे बंद कर देबा उचित आ घर को जिबा उचित नेक्स्ट होची सेट अप रो माने होची टू स्टार्ट अ बिजनेस और एन इंस्टीट्यूशन सो गोटे बिजनेस बा गोटे इंस्टीट्यूशन आरंभ करिवार मीनिंग होची सेट अप आई प्लान टू सेट अप अ बिजनेस आफ्टर गेटिंग द डिग्री सो मु डिग्री टी पाई सला परे गोटे बिजनेस आरंभ करिवा कथा चिंता करूची नेक्स्ट होची यूज्ड अप रो माने होची टू एग्जॉस्ट समथिंग सो दैट नथिंग इज लेफ्ट गोटे जिंस को संपूर्ण भाबरे यूज करनबा आई हैव यूज्ड अप ऑल द पेट्रोल इन माय स्कूटर मो स्कूटर रो समस्त पेट्रोल मु यूज करि साची नेक्स्ट होची ब्रोक अप रो मीनिंग होची सेपरेट बा अलग हे जिबा द ग्रुप ब्रोक अप आफ्टर द क्वारल झगड़ा परे से ग्रुप टी अलग हे गला नेक्स्ट होची गेट अप रो माने कोन टू लीव बेड आफ्टर स्लीपिंग सोई की उठिबाटा को कहा होची गेट अप वी यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें सकाळ सब दिन जल्दी उठू तापरे होची लुकिंग अप अ सिचुएशन गेटिंग बेटर आफ्टर 3 long rainy days the weather is looking up माने सिचुएशन टी के बेटर होउची 3 दिन रो वर्षा परे
आज टिके पाग भलो होची. Next होची turn off. Turn off ର meaning होची to come to a meeting. Only a few students turned off in the class due to heavy rain. So बहुत कम पिला आछंती आज क्लास को because वर्षा होतिला, because of heavy rain. Next होची blew off. Blew off ର माने होची to destroy by exploration. So a platoon of soldiers blew off a bridge. यार अर्थ होची ध्वंस करदबा by explosion. So से platoon of soldiers गोटे platoon सैनिक से ब्रिज टी को भांगी देले. नेक्स्ट होची bring up. Bring up ର माने होची to take care of बा जत्न नबा. We should bring up children with care. छोटो छोटो पिला मानकर जत्न नबा उचित. नेक्स्ट होची made of. Made of ର meaning होची to make something attractive. गोटे जिंस को attractive बनेबा. So we made of our house before my sister's marriage. भौणी को बाहागर आगरु आमे घरटी को टिके attractive बनेलु बा सुंदर बनेलु. To arrange something to happen. We have fixed up the meeting for the next week. Fixed up रो माने होची to arrange something to happen. किछि जिंस को arrange करिबा. So next week पई आमे गोटे मीटिंग को arrange करिलु. Next होची give off. Give off रो माने होची to stop doing something. किछि जिंस को बंद कर दबा. Do not give up hopes. Hope छाड़ो नाही. Next होची hold off. Hold off रो meaning होची to obstruct. A marriage procession hold off the traffic for an hour. अटकी जिबा बा रही जिबा. So गोटे मैरिज प्रोसेशन आसुतिला बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक जाम हेतिवारु ताहा गोटे घंटा धरि की रही गला. नेक्स्ट होची कीप ऑफ टू मेंटेन समथिंग एट अ हाई लेवल. गोटे जिंस को हाई लेवल ले मेंटेन करके चलीबा बा कंटिन्यू रखिबा को कहा होची कीप ऑफ. वी मस्ट ट्राई टू कीप अप द ऑनर ऑफ आवर स्कूल. हम स्कूल रे जेंति रेस्पेक्ट अछि हमें ताकू रखिबा उचित. नेक्स्ट देखिबा एक्टिविटी 6 रे कोन को आइछि रिप्लेस द अंडरलाइन expressions with phrasal verbs using the verbs given in brackets. So एटी किछि verb दिया हेछि हमें ताको phrasal verb रे कन्वर्ट करिकि ता appropriate स्थान रे यूज करिबा. I don't like the way Swami is being educated. एटी bring दिया जाइछि कोन कहबा हमें I don't like the way Swami is being brought up. So bring एटी educate बा rear दिया हेतिला bring up रो माने एटी brought up हेछि द past tense. एटी brought up होछि phrasal verb तार meaning दिया हेतिला educate or rear. The government rejected the employees' request for pay revision. So it turned दिया हेछि कोन थिला turn down थिला reject कर दबा. The government turned down the employees' request for pay revision. तो माने बही एटा सब डिटेल्स दिया हेछि तमे देखि परिबो जाई कि turn down नो माने reject दिया हेछि. कर्मचारी माने जो रिक्वेस्ट करथिले ताहा गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देले. नेक्स्ट होची द स्ट्राइक वाज कैंसल्ड. आ ब्रैकेट दिया हेछि कॉल हमें कॉल वर्ड टाको यूज करके गोटे फ्रेजल वर्ब बनेबा. द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ माने कैंसल्ड बंद हे गला. वी रिड्यूस्ड आवर एक्सपेंसेस आफ्टर आवर फादर्स रिटायरमेंट. एटी होची कट कोन हे जबो कमी दबा. वी कट डाउन आवर एक्सपेंसेस हमें हम खर्च को कमी देलु आफ्टर आवर फादर्स रिटायरमेंट. नेक्स्ट होची I disappointed my parents by my poor result. एटा होची let. So I let down my parents by my poor result. मो बाप मां को disappoint कली by my poor result. मो खराब result रे. I can hardly understand what you say. एटा होची make. कोन हिजबो I can hardly make out what you say. यार अर्थ होची understand. माने मो बहुत कोचित बुझी पाउची तुमे जहा कहउचो. Most children resemble their parents. यारो देछि verb गोटे take. Most children take after their parents. यारो अर्थ होछि resemble. समान जणा पड़िबा बहुत पिला तांको बापा मां को भलिया देखा जानती. We called a doctor when my mother was ill. एटी देछि send. We sent for a doctor when my mother was ill. Send for रो meaning होछि called डाकिबा. We continued working long after the evening. So एटी keep देछि verb ताको हमें phrasal verb करिबा. We kept up working long after the evening. Continued या meaning होची continued. Have you read the book I gave you? एटी होची go दिया छि ब्रैकेट रे. Have you gone through the book I gave you? एटी पढिबा gone through माने गोटे बही पढिबा को कहै जाय gone through. एबे देखिबा activity 7. Combine one verb from group A with a suitable particle B. In this way frame 10 phrasal verbs. Use them in sentences. Who will do it first in the class? So ita class रे गोटे activity करिया पय दिया आइछि but I have done the answers.
ग्रुप ए रू गोटे वर्ड नब ग्रुप बी रू गोटे वर्ड नब ताको कंबाइन करके ता मीनिंग रे सेंटेंस लिखिबा सो ब्रेकआउट रो मीनिंग देछि सो ब्रेकआउट रो सेंटेंस देछि एटी ब्रेक निया गला आ एठू आउट निया गला याको हमें कंबाइन करी गोटे सेंटेंस बनेबा द मैन ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन लास्ट मंथ एटा होछि हमरा फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट होछि ब्रिंग अप सुलोचना इज ब्रॉट अप इन ए कंजर्वेटिव फैमिली ब्रॉट अप एटी अप होबो ब्रॉट अप इन ए कंजर्वेटिव फैमिली ब्रॉट अप माने बढ़िबा बा बड़ होबा सुलोचना गोटे कंजर्वेटिव फैमिली रे बड़ हेछि कॉल ऑफ शी कॉल्ड ऑफ हर एंगेजमेंट और कॉल ऑफ रो माने कोन तो माने मते कमेंट सेक्शन में लिखि जणा नेक्स्ट होछि कम डाउन रितु केम डाउन विथ सीवियर कोल्ड यस्टरडे सो कम आउट डाउन को नेलु एठी हम ता टेंस चेंज करिकि कम रु केम करिलु बिकॉज़ यस्टरडे एठी थिला गोटे पास्ट इवेंट विषय कुआ जाईछि नेक्स्ट होछि कट इनटू प्लीज कट दिस एप्पल इनटू 6 पीसेस ताको काटिबा गेट ओवर होछि यू शुड गेट ओवर योर सैडनेस नाउ नेक्स्ट होछि गिव इन आई ट्राइड माय बेस्ट टू कन्विंस हिम बट आई फाइनली गिव इन गिव इन टा हेछि गिव इन बिकॉज़ इट ट्राइड अछि माने पास्ट लिखाई थिला गो आफ्टर ऑलवेज गो आफ्टर योर पैशन इट गो आफ्टर को यूज कराई छि सेंटेंस रे नेक्स्ट होछि कीप अवे हेवी ट्रक्स आर केप्ट आउट ऑफ दिस रोड सो इट कीप आउट कर दबो नेक्स्ट होछि लेट डाउन आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन सो आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन इट लेट डाउन यूज कराई छि बट मझरे यू को रखाई छि जेंति हमें एक्टिविटी 1 रे करिके आसिलु नेक्स्ट होछि मेक फॉर शी मेड फॉर होम व्हेन यू अराइव्ड एटी होछि मेड फॉर को यूज कराई छि नेक्स्ट होछि पुट बाय शी पुट बाय 1000 एवरी मंथ फ्रॉम हर सैलरी सेट आउट एटी पुट बाय को हम लिखि परथांते आउ ले बाय नेक्स्ट होछि सेट आउट ही सेट आउट ऑन ए वेकेशन एटी सेट आउट को यूज कराला दैट मींस स्टार्ट ए जर्नी टेक ऑन होछि शी टुक ऑन मोर देन शी कुड हैंडल एटी फ्रेजल वर्ब टुक ऑन को यूज करागला टेक ऑन रो पास्ट टेंस हला टुक ऑन नेक्स्ट देखिबा हम एक्टिविटी 8 चूज द करेक्ट पार्टिकल्स एंड कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंसेस सो प्लीज टर्न डैश द रेडियो टर्न ऑन द रेडियो cholera broke out everywhere the meeting came up very successfully I do not give in to anybody's pressure I agree with you on this point they have closed down their old business I looked after him as my own father. Every month I lay by a few rupees for my child's education. एवढा सब phrasal verb होची यार माने तो माने previous video check करी परिबो. I could not make out what he was saying. Make up भी हे परिबो but एठी ता कथा मु बुझी पाउनी से पई हिची make out. Understand. The police put off the violence. Nobody was at the airport to see him off. ताको छाड़ियो पई केही सेठारे नथिले. C of your phrasal verb is why did he turn down your request? A nuclear war cannot be ruled out in the future. The thief made off with a large amount of money. The old man passed away in his sleep. Passed away means died. Ebe dekhiba हम activity 9 replace the words in italics with their corresponding phrasal verbs choosing from the given list given. So तळे किछि phrasal verb दिया आइछि आमे ताको यूज करियो सेंटेंस रे he has it आइगला brought out a new book we are tired we must pack up माने stop working we can keep on working if you like keep on माने कंटिन्यू रखिबा will you stand by me during my bad days ता होछि छिड़ा हवा माने सपोर्ट करिबा he has not been able to get over his fear get over माने overcome करिबा बा जयलाभ करिबा नेक्स्ट होजी we dropped out from the match after a quarrel the talk between India and Pakistan fell through due to many disagreements he promised to help me but later he went back on his promise India has done away with the caste system the situation is looking up day by day so एवढे भाबरे यार phrasal verb गुडी को तमे लिखि परिबो the meanings again I am telling you the meanings you can check in the previous video last अछि activity 10 choose the appropriate phrasal verb
from the given list for each of the sentences below and complete the sentence. ସେଇ ଭଳିଆ ଦିଆଯାଇଛି. When the whole class was worried how to solve the problem, Suresh come out with a solution. So ଏଠି come out with ମାନେ ଏଠି phrasal prepositional verb ଦେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ main verb ଅଛି, ଗୋଟେ adverb particle ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ preposition ମଧ୍ୟ ଅଛି. ମୁଁ chapter ଟି ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ phrasal verb ଗଢି ପାରିବା. We all are eagerly looking forward to our sister's wedding. That means excited. I come in for it. I টা হবনি phrasal verb হবো come in for a rude shock when my friend cheated me. We have run out of sugar. Can you buy some? Run out of মানে সরি ଯିବା. We do not dash our new neighbor. Get on with ଆମର ନୂଆ ନେବରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ. We can dash such mischief put up with. The child walked fast to catch up with his parents. ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁଛି. So this much it for today's video. We have covered the question answer part of the phrasal verb. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Do like, comment, share, and also subscribe to this channel if you haven't yet. Do check out my channel Literature Library for more such informative videos. And thank you so much for watching this video.